Guys, myself shivang.tiwari. Currently, I'm working as a DevOps engineer at Sumo Logic, and I'm starting a new playlist जिसपे हम Linux के topics cover करेंगे, mostly with interview point of view. So yeah, let's start the video. आई थिंक इन ईच इंटरव्यू मैंने भी जो इंटरव्यू दिया है उसमें मुझसे पूछा गया है लाइक दैट व्हाट इज कर्नल, राइट? एंड इट्स मेक सेंस दैट इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन एंड पीपल एक्सपेक्ट यू टू नो दिस. So let's start with the very basic definition of the kernel. Kernel is a core of the operating system and it acts as a bridge between hardware and software. But the problem here is that if आप इतना ही बोलोगे ना, so interviewer will not be happy and वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा टू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर. सो यू कैन गिव एन एग्जांपल लाइक इफ आई नीड टू एक्सप्लेन यू, देन मैं उसको ऐसा बताऊंगा कि लेट्स से there is a software editor is a VS Code, right? And you want to open some of your code from your system. So आप बोलते हो कि please open the this file. So that software will go to the kernel and kernel will talk to the hard drive and it fetches that data from the hard drive and load it into RAM and then आपके वो स्क्रीन में दिखता है. So this is how it works, that kernel सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करता है, कर्नल वो दोनों के बीच में रहता है. तो सॉफ्टवेयर हार्ड कर्नल को बोलते हैं, कर्नल वर्क्स रेस्ट ऑफ दैट. So yeah, the primary, if you can say, is that primary work of the kernel is it act as a bridge between hardware and software, but उसके कुछ अलग core functions भी हैं like process management, memory management, device driver and system calls. If we go one by one, so process management is basically allocating CPU time. So CPU हमारे एक ऐसा resources है जो time पे dependent है. So it's not like if your four core of CPU, then you can give it one core to each process. ऐसे काम नहीं होता है. कर्नल डिसाइड कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लेगा एंड इट वर्क्स ऑन शेड्यूलिंग बेसिस. आप इसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ सकते हो, बट या जस्ट फॉर द ओवरव्यू, kernel does the process management and it basically means it allocates CPU time to each process to run parallelly. Then we have a memory management, which basically distribute RAM effectively so that all the processes that are running has the efficient memory and RAM. Then there is a device driver. Device driver is one of the core functionality that kernel provides. डिवाइस ड्राइवर कोई डिवाइस नहीं है, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कि डिवाइस को मैनेज करता है. वी हैव अ डिवाइस, राइट? लाइक माउस, प्रिंटर एंड like other things that we add like USB, right? So device driver, what happen is when जब हम कोई भी एक डिवाइस प्लग करते हैं तो कर्नल ड्राइवर को लोड करता है एंड देन ड्राइवर नोट्स हाउ टू हैंडल दोज डिवाइसेस. ओके, तो हम अगर इसका एक नॉर्मल सा डेफिनेशन देखें तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है विच इज़ मैनेज बाय द कर्नल टू इनेबल कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर्स डिवाइसेस, एंड इट एक्चुअली फॉर्म्स अ कोर फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न operating system kernel. Then we have a system call. We talked about how kernel acts as a bridge between hardware and software, right? तो सॉफ्टवेयर कैसे रीच आउट करेगा कर्नल को, दैट हैपन वाया सिस्टम कॉल. I actually have a very good question on system call that we can discuss on next video. For this video, this is it. Thank you.